Welcome back everyone. In the series of learning C programming, we have already discussed constants in C. That is, what are different types of constants and how to declare constants. Everything like some valid constants and invalid constants, right? In this video, I am going to talk about variables in C language. These things will be used when you write a C program. So, upon the completion of the session, the learner will be able to understand what are variables, need of variables, how to declare variables, and rules for constructing variable name. So, now first discuss what are variables. First, we discuss variables right? So, what is need of these variables? See, when you write a program like to print hello world, you don't need any variable, like just you need to what? That is print and again in bracket double quotation hello world, because hello world is a string, so double quotation and in last semicolon. Okay, that's it. But if you want to do some processing operations or some computational task, like suppose you want to find out maximum among three numbers, like the numbers are maybe 10, 20 and 30. Okay, you will find out maximum among these three numbers. So what will you do? If you not write a program, you will easily say that maximum is 30. But just seeing these numbers, okay, but for this you have to store these numbers into your memory, right? Suppose I erase these numbers, okay. So, but now these numbers are in our memory, that is, the numbers are 10, 20 and 30. So, we easily remember them and tell that 30 is maximum among all. But if you want to do this processing using computer, so you have to give some instruction to the computer. And how will you do it? By writing programs, right? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥ୍ରୁରେ ଯଦି କିଛି ବି କାମ କରେଇବା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମାଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାକୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିପାରିବ, ରାଇଟ୍? So you will write a program using any programming language and submit that program to computer, and then you will get the output that maximum number is 30. So now computer is not having its own brain, although it's having its memory but not brain like human have. So there you need to store these numbers in computer memory. जदि हमको ये numbers भितरे ताको command दबार अछि जे तीनटा number भितरे greatest किए, then ताको प्रथमे store करिया पड़िबा computer memory. So now to store these numbers, to store some values, what you need? You need a variable name. Like see, suppose this is a memory of a computer. See, suppose this is a memory of a computer, and if I store 10 here, 20 here and 30 here in any random locations. So these are having some addresses. Suppose address of 10 is 1000, address of 20 is 1024 and address of 30 is 3000. Okay. Now if you want to access or use these values in your program, then how will you use? And see, we don't know where these numbers are stored. Either you have to check for these addresses, but generally we cannot touch or access the memory locations in computer, right? It is not possible. So what can we do? We can give a name to all these three memory locations. Like suppose I am giving a name A to this and B to this and C to this. Okay. आउ थे मुझे क्लियर डायग्राम कर दूची तो देइटा हमर कंप्यूटर मेमोरी हला आउ सेथिरे मु एठी A को स्टोर सॉरी एठी 10 को स्टोर कली जार नेम देली A, 30 को एठी स्टोर करथिली जार नेम देइछि मु B एंड 20 को एठी स्टोर करथिली जार नाम देइछि मु C और सेमान का एड्रेस लिटरली हमें 1000 1024 और 3000 रखिछि. ओके. So now if you want to access these numbers, then you can easily access by calling the name only, like A, fine. You can call B, then 30 will be displayed, or you can call C or print C, then 20 will display. So you can easily fetch the value by their names. So these A, B, C, these are what? These are variable names. These are variables. Okay. So variable is what? It's, you can say, a named memory location, or you can say variable is a memory location, is a name of memory location where you can store data and value. So simply I am likhi pariba variable is a named memory location where we store data or values.
जहाँ भी आम स्टोर करने जदि गोटे मेमोरी लोकेशन यूज करुचे कंप्यूटर रे ताले आमे ताको कहबा वेरिएबल ओके so we declare anything to name a variable like a b c or anything but suppose I want to print sum of two numbers suppose I want to print sum of two numbers so I will write c equals to a plus b easy so rather than writing c here you can print here suppose a is 10 b is 30 here a is 10 and b is 30 then c will have what 40 because हमें a और b को add करी addition टा c रे store है but rather than writing c programmers do what they write down a meaningful name like हमें याको ये भर लिख परिबा sum equals to a plus b meaningful name देले sum this would be more meaningful you can easily figure out that the sum variable is containing sum of the two numbers that is a and b okay and as the name suggests variable means vary that is the value may be changed during the execution of a program आमे throughout the program जिते भी चाहिए variable value को change करि परिबा बुझियला so in the previous video I have discussed also suppose I am taking int see int a equals to 10 here throughout the program anywhere I will change it like आमे 10 टा को again लिख परिबा int a equals to 50 and the value would be updated to 50 now that a ର value जो 10 थिला सेटा अपडेट हेकी केते हे गेला एबे 50 if after I will write that जदि मु या परे पुनी again लिखिबी int a equals to 60 so after that the value became 60 ताले 50 टा जा थिला 50 अपडेट हेकी एबे केते हे गेला a ର value 60 so the previous values are gone or deleted automatically जहाँ भी previous value थिला 10 50 जेतले हम 10 to 50 को अपडेट करले 10 automatically delete हे गेला ताले 50 to 60 को अपडेट करले 50 automatically delete हे जिवो so you can change that value but if you can define like जदि हम एई भरी लिखुचे जेमति पूर्व वीडियो रे हम कहिथिले const int a equals to 10 const keyword लागि ता माने एटा टाइप गोटे टाइप रा constant so now you cannot change the value because here a is a constant variable okay constant so that we already discussed in previous video now let us discuss how to declare a variable okay so here we see declaration and initialization see for declaration we need two things declaration भाई हमको दीटा जिंस दरकार हम जदी declaration करिया चाहिबा variable को ताले ता पय दीटा जिंस दरकार कोन कोन first is data type प्रथम हमको data type दरकार and second one is the variable name ए दीटा हमें declaration part रे मेंशन करिया so here I can write suppose data type is int और variable name data type माने कोन जो variable हमें यूज करछे से variable को टाइप रो डाटा को निज भीतर होल्ड करके रखिबो सेटा हमर मेंशन करे data type okay so suppose data type is int माने करा मु चाहूची integer value किछि स्टोर करिया पे मो variable भीतर so int data type देली data types may be in int float character okay so these we will discuss later and variable name suppose I am writing here a this is my data type and this is my variable name okay so it is my declaration of variable so this is what declaration of variable it is telling the name of that memory location that is a and if you write this then the compiler compile it and when the control will come to this point this line during execution of the program then what will happen it means there is a memory location and the name of that location is a okay so suppose here computer memory there is a memory location and तार name हमें variable name कौन देइछे a और suppose the address मु रखिछे 1000 okay and how many bytes would be allocated to this a जदि हमें कंप्यूटर मेमोरी रे a बोली गोटे वेरिएबल को क्रिएट करूचे जहा भीतर हमें किछि इंटीजर टाइप रो डाटा को स्टोर करबा तले सेटा केते बाइट ऑक्युपाई करबा केते स्पेस ऑक्युपाई करबो दैट इज अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा टाइप सेटा डाटा टाइप ऊपर डिपेंड करे आउ इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट कंपाइलर्स somewhere integer allocates 2 bytes and somewhere it is 4 bytes हमें जो int data type यूज करछे ए जो integer data type टा कोटी कोटी 2 bytes भी allocate करे कोटी कोटी 4 bytes allocate करे सेटा डिपेंड करबा तुम्हारा कंपाइलर ऊपर right so if you want to store some value within variable then what will you do you can write simply a equals to 10 तामाने जदि हमें a equals to 10 लिखुचे एटा हे गला हमर इनिशियलाइजेशन तले हमें या वैल्यू को इनिशियलाइजेशन कर देला हम वेरिएबल को एबे 10 वैल्यू टा कोन हो जाय कि असाइन हे जिवा हमर a रे तले a भीतर हमर केते वैल्यू आसे जिवो एबे 10 ओके सो आमे ताकू केमते लिखिबा डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन को int a फर्स्ट डिक्लेयर करले
ए गोटे वेरिएबल क्रिएट कले जे कि इंटीजर टाइप रो डाटा को निजे भीतर स्टोर करिवो देन a इक्वल्स टू 10 ताले ए जो वेरिएबल कले ता भीतर हम का स्टोर करबा 10 को ताले 10 वैल्यू रहि जाला a भीतर एटा होची हमर वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ओके and you can also perform declaration and initialization in a single statement हम एटी दीटा स्टेटमेंट लिखले तो याको हम सिंगल स्टेटमेंट रे लिखि परबा केमती int a equals to 10 गोटे स्टेटमेंट रे declaration plus initialization दीटा जाको हम perform करि परबा राइट so rather than the above two lines you can also write it in a single line okay take an example and tell me the code is correct or not see here that is void main then bracket a equals to 10 int a then printf a रो वैल्यू को प्रिंट कर परसेंटाइल d एथि पई int पई हम पढिबा नेक्स्ट तळे जो स्पेसिफायर्स गुडा को हम कोन पई यूज करे सो परसेंटाइल d देन कॉमा a जेतर प्रोग्राम करिबा और डिटेल्स रे जानिबा जे को लाइन टा कोन पई लिखा होची देन गेट cs आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करबा लास्ट ब्रैकेट एंड ओके सो यार आउटपुट कोन हबो आ ई कोड टा करेक्ट अछि कि इनकरेक्ट अछि टेल मी इन द कमेंट बॉक्स राइट सी हियर what the declaration of variables tell first the name of the variable and second thing is the type of data that the variable is going to hold we have already discussed that and here it is going to store integer data आमे जहां भी डाटा जो पूर्व देखिले स्लाइड रे सेटा integer data को स्टोर करथिला so if I write here float a जदि मु लिखिबी float a ता मीनिंग कोन then the name of the variable is a and this is going to store float value कहले फ्लोटिंग जो थरा हमर डेसिमल पॉइंट थिबो जेमति हम गले 12.34 2.56 ए सब डेसिमल पॉइंट थिले ताको हमें फ्लोट डाटा टाइप भीतर स्टोर करियो सी यू कैन आल्सो राइट डाउन int a equals to 1 comma b equals to 2 you can also initialize more than one variable that is multiple variables in single statement that is also correct fine but keep one thing in mind that is the type of a variable cannot be void right you cannot write void a ए भली तुम लिखि पारियो डाटा टाइप टा बा वेरिएबल जो वेरिएबल भीतर जो डाटा टा हम स्टोर करछे से अनुसार डाटा टाइप को हमें एठी मेंशन करूछे सो void केबे हेले गोटे डाटा टाइप हेई परिबोनी वेरिएबल त माने वेरिएबल जदि हम क्रिएट करछे किछि ना किछि त वैल्यू ता भीतर निहाती हम रखिबा किछि ना किछि वैल्यू से होल्ड कर रहइबो void मींस कोन एम्प्टी खाली सो सेटा तो केबे पॉसिबल होबन सो दिस इज इनकरेक्ट दिस इज नॉट पॉसिबल ओके सो दिस इज ओवरऑल द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल राइट नाउ while constructing the name of a variable what you need to take care what are the rules so देखिबा rules कोन कोन हमें फॉलो करिबा गोटे variable name करिवाले गोटे variable name को construct करिवाले so let's discuss the rules for constructing a variable name okay so first rule is what a variable name may consist of letters digits and underscore may consist of letters digits and underscore is a type of special symbol I mean jani already okay special symbol so if I write here a b c this is valid if I write average this is also valid if I write sum this is also valid if I write sum 1 2 this is also valid if I write sum underscore 1 2 combination of a letter underscore and digit so this is also valid but if I write sum space 1 2 एटी मझिरे हमें ब्लैंक स्पेस देइचे गोटे कैरेक्टर हमर मझिरे ब्लैंक अछि ओके सो एटा हमर कोन हो इनवैलिड काहे ना केवल अंडरस्कोर ही अलाउ होबा हमर वेरिएबल नेम भीतर अलगा कोनोसी स्पेशल सिंबल हमें ता भीतर इंक्लूड करि परिबा नाही सेइ बडे हम जदि लिखिबा sum @12 सॉरी $12 तो एटा भी हमर इनवैलिड हबो क्लियर सो एटा होची फर्स्ट रूल जे हमर जहां भी हमें लिखिबा वेरिएबल नेम रे सेथरे लेटर्स थिबो डिजिट्स थिबो एंड जदि किछि स्पेशल सिंबल ऐड करिया छै देन यू कैन ऐड अंडरस्कोर ओनली राइट सो कमिंग टू रूल नंबर 2 that is variable name also start from a letter variable name हमें जेतेबेले लिखिबा start from a letter or alphabet and alphabet सब बेले alphabet ru ही start करिबा variable name करिबा okay if I write 1 2 3 sum then this is invalid काहेकि first हमर को start हेछि digit ru you cannot start with a digit but in sum compiler it will be valid if you use underscore जदि हम लिखिबा underscore sum compiler this is valid त माने किछटा compiler छै जे कि underscore को first letter भाबरे हमर first variable name रे first letter भाबरे से include करिबो accept करिबो okay this is valid and you cannot also write that is a b then
comma 1 2 comma allow नहीं तो एटा कोन आइजिवो इनवैलिड हो ओनली अंडरस्कोर एमती होची गोटे स्पेशल सिंबल जे की वेरिएबल नेम भितर allow राइट नॉट एनी अदर सिंबल्स आर अलाउड जेमते हमें आइडेंटिफायर ऑलरेडी पढ़ी जे आइडेंटिफायर रूल कला बेले भी केवल अंडरस्कोर ही अलाउ होबो स्पेशल सिंबल भितर आ कोन से स्पेशल सिंबल अलाउ नाही सेम रूल भी एप्लीकेबल होबो तुमरा वेरिएबल नेमिंग पे राइट सो नेक्स्ट रूल नंबर 3 इज keywords cannot be used as a variable name keywords cannot be used as a variable name. So keyword means some reserved words in C. That is C having 32 keywords, right? These are having some predefined meaning. So you cannot use those keywords as a variable name. Like you cannot use a variable name. आमे जेमती कहली कीवर्ड भीतर include टा गोटे कीवर्ड तो ताको आमे यूज करि परिबानी ब्रेक सेटा भी हमर गोटे कीवर्ड ऑलरेडी फिक्स्ड मीनिंग तार अछि रिजर्वड वर्ड तार प्रीडिफाइंड मीनिंग के अछि सो जो मीनिंग पय सेटा डेवलप हेछि सेही मीनिंग पय ही हमें ताको यूज करि परिबा ताको आइडेंटिफायर भाबरे यूज करि परिबानी वेरिएबल भाबरे यूज करि परिबानी सो दिस इज इनवैलिड सेमते हमर इफ अछि इफ टा भी गोटे कीवर्ड सो ताको भी हमें वैलिड करि परिबानी एज ए वेरिएबल नेम because these are keywords okay that we will discuss in next video next is what next number rule is fourth number rule uppercase and lowercase letters are different see uppercase and lowercase letters are different so uppercase और lowercase कहले कोन हमें बुझिचे हमें जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर हमें कहजे लाइक ओके लाइक इफ आई राइट हियर see norm and norm एटी मु तीनटा टाइप रो नॉर्म लिखिछि राइट दीज आर थ्री डिफरेंट नॉर्म्स थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स ओके दीज आर डिफरेंट वेरिएबल नेम्स बिकॉज़ सी इज व्हाट केस सेंसिटिव ऑलरेडी मु कहिछि सी टा कोन हमर केस सेंसिटिव तले सी रो हमें फीचर्स पढिथिले सेतबेले जणाइथिले जे केस सेंसिटिव कहले कोन जदि हमें जे कोनसी गोटे टर्म हमें सी रे यूज करबा सेटा कैपिटल रे यूज करछि बा अपर केस रे रखिजे देन थ्रू आउट द प्रोग्राम हम ताको अपर केस रे लिखियो पड़े अदरवाइज एरर आसीबो तमाने जदि हमें ए बडी नॉर्म लिखुजे प्रोग्राम रे then throughout the program total program भितर हमको ए बड़ी भाबरे ही नाम को लिखिया पड़े that is n is your upper case u and m is your lower case जदि हम ता जगह n u m ए बड़ी हम डिक्लेयर करबा सब तक लोअर केस देन सेटा एरर आसीबो बुझिला सो ए तीनटा जगह मीनिंग डिफरेंट right I am discussing it in the features of C language okay so that's it about this video and in the next video I will discuss keywords and identifiers in C language okay so thank you